अपनी सराउंडिंग अपनी सराउंडिंग को बोलते हैं डिवर्सिटी। जो आसपास हम देख रहे हैं, जहाँ जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनको बोलते हैं डिवर्सिटी। Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? Is this chapter you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, culture, or religious background. These differences enrich our lives in many ways and also makes them more fun. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and the cultures have to make India so interesting and so diverse. What does diversity add in our lives? How did India become like this? All of the kind of differences a part of diversity. Can diversity also be part of unity? Read this chapter to find some answer. अब कहते हैं अगर हम क्लासरूम में ही देखें, है ना, हम अपने आसपास देखें, तो जो चिल्ड्रंस, जो स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए आते हैं, वो हर कोई सेम नहीं होता, है ना। हर कोई सेम नहीं होता, कोई अलग धर्म से होता है, कोई अलग किसी का कल्चर है, हर किसी का रहना सहना अलग है, वो अलग है। ठीक है, तो यही जो है ये डिवर्सिटी है हमारी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, three children around your age have drawn the figures above. Use the empty box to draw your human figure in your drawing similar to any of the others. The chances are that your drawing is quite different from the other three. There can be you are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. We not only don't exactly like each other but also differ in terms of language we speak, our culture, background, religious ritual. We observe accordingly draw. खाली साइड पे बनाए, इस पे आप कोई फोटो बनाओ या कोई भी ह्यूमन का फिगर बनाओ, मतलब कोई भी ह्यूमन की शेप बनाओ। कहते हैं ऊपर जो अब ड्राइंग तीन बच्चे बनाए हुए हैं, है ना, उनकी ड्राइंग, वो किसी तीन बच्चों ने वो ड्राइंग की है। अब आप अपनी ड्राइंग करो, जो आपकी ड्राइंग होगी ना वो डिफरेंट होगी, और जो वो तीन बच्चों की ड्राइंग है वो डिफरेंट होगी। कहते हैं हर किसी का जो है दिमाग डिफरेंट है, हर कोई जो है अलग अलग है, अलग अलग सोचता है, अलग अलग बोलता है ना। हर कोई जो है वो सेम नहीं है। नेक्स्ट, and screaming out of the evening headlines in the mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. Now ask a teacher to help you check how many of you have similar answers. Is there anyone who list matches your exactly properly note? Put next करना नीचे, ऊपर को करो, थोड़ा ऊपर करो, नीचे वाला पोर्शन दिखे। वही जिधर हम पढ़ रहे थे वहां ही, थोड़ा नीचे को वो पोर्शन नहीं दिख रहा था जिधर हम पढ़ रहे थे उधर। थोड़ी अब ऊपर लेके आओ, नीचे वर्डिंग्स नहीं दिख रही। थोड़ा और ऊपर।
बस 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 ठीक. Now ask your teacher to help you check how many of you are similar answers. Is there anyone who list matches your exactly? Probably not. But many of you have similar answers. How many like reading the same kind of books? How many have different language has spoken by the students in your class? By now, you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. अब कहते हैं कि एक टीचर ने एक बच्चों को बोला कि आंसर लिखो. ठीक है, क्वेश्चन दे दिया और बोला आंसर लिखो. अब हर किसी के जो आंसर्स हैं वो अलग होंगे. हर किसी का अपना विचार है, हर किसी के आंसर जो है वो अलग होंगे. अब ऐसा वो कहते हैं कि क्या जो लिस्ट है जो बोला लिखने को वो मैच करेगी? कहते नहीं, नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हर किसी के जो विचार है वो अलग है. फिर उसके बाद में बोलते हैं हर किसी का अपना अपना जो है ओपिनियन है, हर एक किसी के अपने विचार है. नेक्स्ट. Making friends. Do you think it would be easy for you to make friends with someone who has who was very different from you? Think about your story and think about this. I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at a busy intersection. Every time my cycle passed, he would run after me, holding out the English paper. इंग्लिश पेपर. अब वो ऊपर वाली साइड लेके जाओ, उधर डायलॉग्स दिए हैं पीछे पीछे. मैं इसके ऊपर, इसकी डायग्राम के ऊपर वाला वो शो कर दो. बस. And screaming out of the evening headlines in the mixture of in, नहीं, नीचे आओ. बस बस बस. And screaming out of the evening. ऊपर 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 वाली साइड. डायग्राम के ऊपर वाली साइड. ये ये जो है ना ये ऐसे चलता है पहले कि आपने ये साइड पढ़नी होती है. देन उसके बाद में ये जो पेपर है बाद में इस वाली साइड पढ़नी होती है. ये डायग्राम के ऊपर वाली साइड में बोल रही हूँ. ये वाली. हम्म. And screaming out of the evening's headline in the mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. You mean you know Hindi? He asked. Of course, I said, as I paid for the paper. Why, what did you think? He paused. But you look so Grace, he said. You mean you can even read Hindi? Of course I can, I said this time a little impatiently. I can speak, read. कहते हैं एक बच्चा होता है वो ना न्यूज़पेपर बेच रहा होता है. तो एक आदमी होता है उसको लगता है कि इसको ना हिंदी आती नहीं होगी.
ठीक है, तो ये पता नहीं पढ़ पाएगा कि नहीं, कि वो तमिल वगैरह उसको ऐसा कुछ आता होगा, उसको हिंदी नहीं आती होगी। पर जब वो आदमी ने बोला कि वो आदमी कहता न्यूज़पेपर वाले को कि मुझे इंग्लिश की जो है, इंग्लिश और हिंदी का न्यूज़पेपर दे, जिसमें इंग्लिश भी लिखी हो हिंदी भी लिखी हो, ये न्यूज़पेपर दे दे जा, कोई भी इनमें से दे दे। तो फिर वो कहता है कि सच्ची आपको हिंदी का दे दूं मैं न्यूज़पेपर? कहता हाँ दे दे, क्यों क्या हुआ? कहता कि मुझे लगता है कि आपको हिंदी नहीं आती। कहता ऐसे ही मुझे हिंदी आती है, मैं बोल भी सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ। नेक्स्ट। स्टॉप स्टॉप एंड राइट हिंदी। Hindi is one of the subjects I study in school. Subjects? He asked. How could I explain what a subject was to someone who had even been to school? Well, it is something I began, but the lights changed and the hooking behind me grew a hundredfold, and I let myself be punished along with the rest of the traffic. अब कहते कि हाँ मैं हिंदी लिख भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और मतलब बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। कहता हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट होता था, ठीक है, जो कि मैं स्कूल में पढ़ता था। तो वो लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो कहता है सब्जेक्ट वो क्या होता है? तो फिर वो बंदा सोचता है कि इसको तो चलो सब्जेक्ट भी नहीं पता होगा, क्योंकि ये तो स्कूल ही नहीं गया, तो इसको तो कुछ ऐसा पता नहीं होगा। तो फिर मतलब वो ये चीज ही सोचता है। ये ट्रैफिक सिग्नल का जो है बात है जो हो रही है। नेक्स्ट। The next day he was there again, smiling at me, holding out of a Hindi paper. भैया, he said, आपका अखबार। अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? The English word sounded strange on his tongue. It sounded like its other meaning in English, to be ruled by someone else. अब अगले दिन वो जो है लड़का, वो फिर उसको मिलता है, उसको देखता है, उसको स्माइल करता है, और उसको जो है हिंदी का पेपर जो है न्यूज़पेपर वो दे देता है। और वो कहता है ये लो आपका न्यूज़पेपर, आपकी अखबार। कहता अब मुझे बताओ कि सब्जेक्ट जो है वो होता क्या है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? Oh, it's just something to study, I said. And then, because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? Never, he answered, and he added proudly, I began working then I was so high. He measured himself engaged by cycle seat. Just my mother used to। तो वो कहता है कि इस सब्जेक्ट का मतलब वो होता है कि किसी चीज को पढ़ना, किसी के बारे में पढ़ना। तो वो फिर कहता है कि क्या तुम कभी स्कूल भी गए हो? तो वो कहता है नहीं, मैं कभी भी नहीं गया स्कूल। मैं जो है, मैं जब से बड़ा हूँ तब का मैं काम ही कर रहा हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं नेक्स्ट। Uh, First, my mother used to come with me, but I can do it all alone. Where is your mother now? I asked, but the lights changed and I was off. I heard him say, yell from somewhere behind me. She is in Meerut with. The rest was drowned out. My name is Samir, he said the next day. अब वो कहते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे पहले तो वो मेरी मम्मा अकेला काम करते थे, मैं भी करने लग पड़ा। तो फिर वो आदमी पूछते कि तेरी मम्मा कहाँ है अब?
उस बच्चे से जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। तो इतनी देर में वो पूछ रहा ही होता है कि लाइट जो होती है वो चेंज हो जाती है, सारे लोग चलने लग पड़ते हैं, तो वो भी चलने लग पड़ता है। और फिर वो ध्यान देखता है, उसने मतलब जब ये पूछा था कि तुम्हारी मम्मा अब कहाँ है, तो वो बोल रहा होता है पीछे से कि वो अब मेरठ में है। ठीक है, विद, उसने आगे कुछ बोला कि हाँ इनके साथ है विद, जो कि नहीं सुनाई दिया उस बंदे को जो साइकिल चला रहा है, उसको नहीं सुनाई दिया। बाद में अगले दिन वो बोलता है लड़का कि मेरा नेम समीर है। ठीक है, and very shyly he asked, "What's your?" It was incredible. My bicycle warmed. My name is Samir. Too, I said. What? His eyes lit up. Yes, uh, yes, I grinned at him. It's another name of Hanuman's father, you know. So now you are Samir and I'm Samir too. He said triumphantly. Something like that, I answered, and then I held out my hand. Haath milao Sameer do. His hand shifted in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycle away. तो वो कहते कि मेरा नेम समीर है। दूसरा कहता अच्छा मेरा नाम भी समीर ही है। तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहते चलो, तुम्हें पता है समीर कौन था? ये तो हनुमान जो है उनके फादर थे। फिर बोलता है ये समीर जो है वो एक है, और जो ये है ये समीर, और जो मैं हूँ वो समीर दो हूँ, तो हम दोनों मिलके जो है इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट। So, okay. The next day, he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. I looked at the headlines. Communal riots, it blazed. But Samir, I began. I am the Muslim Samir, he said in answer. And all my people are in Meerut. His eyes filled with the tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. He was not at crossing the day after, neither the day after, nor ever again. And no newspaper in English or Hindi can tell me where my Samidu has gone. तो वो कहते हैं कि अगले ही दिन जो है वो ऐसा जैसे स्माइल करता था, उसने स्माइल नहीं की। वो लड़के की बात हो रही न्यूज़पेपर वाले की। वो कहते उसने स्माइल इसलिए नहीं की क्योंकि मेरठ में जिधर उसकी मम्मी रहती थी, वो कहता है कि उधर एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग मारे गए हैं। ठीक है, तो कि बाकी ये हेडलाइन न्यूज़पेपर वगैरह में भी जो है ये बातें है। बाकी जो समीर होता है जो साइकिल चला रहा था, वो कहता है कि मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ। वो कहता कि और काफी बंदे जो मेरे हैं रिलेटिव्स वगैरह कोई होंगे वो भी मेरठ में ही है। तो ऐसे ही उसकी जो आंखें हैं वो भर आती है पानी से। वो मतलब कि रोने जोगी हो जाती है। फिर उसके बाद में जो है वो उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है कि हाँ चल कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। So he was not at the crossing the day after, neither the day after nor ever again. And no newspaper in English or Hindi they can tell me where my Samidu has gone. अगले दिन जो है वो जाता है बट वो देखता है कि समीर है ही नहीं। एक दिन नहीं है, उससे अगले दिन भी नहीं है। अब समीर नहीं है तो न्यूज़पेपर भी नहीं है उसके पास, ना इंग्लिश ना हिंदी, न्यूज़पेपर भी नहीं है। तो वो कहता है कि मेरा समीर गया तो गया कहाँ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। When Samir A is more familiar with English,
Semi do speaks Hindi, although they both are more at home in different languages. They still communicate with each other. They made the effort to do so because they has an important of them. Sameer Ek and Sameer Do also become from different religion and culture backgrounds, while Sameer Ek is next. Next, Sameer Ek is a Hindu, Sameer Do is a Muslim. Different religion and culture backgrounds such as these are the aspect of diversity. अब कहते हैं कि अब समीर एक जो था जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, है ना, जो वो है उसका रिलीजन अलग है, और जो समीर दो है उसका रिलीजन अलग है। जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वो हिंदू है, और जो न्यूज़पेपर ले रहा था वो जो है वो मुस्लिम है। कहते हैं डिफरेंट रिलीजन के हैं, है ना, पर इनमें जो है इनका जो प्यार था, जो एक दूसरे को ऐसे बुलाना, रोज उससे न्यूज़पेपर लेना, कहते वो तो नहीं इससे कम हो गया, है ना, वो तो सेम ही रहा। तो कहते जो है चाहे इनकी बैकग्राउंड अलग अलग है, बट जो है ये है तो एक ही जगह के ना, एक ही देश के, एक ही संसार के रहने वाले हैं। तो इनको बोलेंगे ये एक डिवर्सिटी है हमारी। तो थोड़ा समझ लगा आपको? समझ लगी आपको कहानी? ओके, गुड गुड, अच्छी बात है। Okay. तो नेक्स्ट है, in addition to their diverse religious and cultural background, they are a race. Next, there are other ways in which Sameer Ek and Sameer Do are different from each other. For example, why Sameer Ek goes to school, Sameer Do sells newspaper. अब कहते हैं दोनों है अलग अलग ही, है ना, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग उनका काम है। एक न्यूज़पेपर बेचता है, एक स्कूल गया है, एक स्कूल नहीं गया, सब कुछ अलग अलग है। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिस्कस वाले टॉपिक पे आओ। Some do not have the opportunity to attend schools. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor, would not have enough to eat and wear, sometimes not even a place to live. The difference is not the same. Next, the difference is not the same as the one we have seen. अब ऊपर वाली साइड, तो वो कहते हैं कि चाहे वो अलग अलग धर्म के हैं, सब कुछ अलग अलग है ना, तब भी डिफरेंस जो है वो ये नहीं है कि हाँ वो उनका एक धर्म है वो ही अलग है, हर एक चीज अलग है। उनकी लाइफ स्टाइल जो है वो सारा ही अलग है। Here we are talking not of only the difference of inequality. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities they are available to other persons. कहते हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हम inequality हैं, ये inequality है, इनइक्वालिटी का मतलब कि इक्वल नहीं है, अलग अलग है।
कहते हैं हाँ अलग अलग जरूर है, पर इनइक्वालिटी हम उधर यूज करेंगे जिधर जो है इनका हर जो अपॉर्चुनिटी, अब अपॉर्चुनिटी तो यही है, अब उसका भी काम हर किसी का जो है अपॉर्चुनिटी, हर कोई चाहता है कि हाँ मैं कमाऊं। कहते बस ये है कि वो कोई ईगो नहीं रख रहा, अगर वो हिंदू है मुस्लिम है वो तब भी एक दूसरे को जो है बुला रहे हैं, उनसे समझदारी से काम कर रहे हैं दोनों, है ना, आपस में मिलजुल के जो है अपना टाइम जो है स्पेंड कर रहे हैं। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ inequality. According to this, society are divided into different groups depending upon the work that the people did, and they have supposed to remain in those groups. So if your parents are porters, you could only become a porter, nothing else. This system are considerable irreversible, and because you ever no supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your professions. This created a situation of inequality which is read about this and other inequalities in the following chapter. कहते हैं inequality जो है वो होगी जैसे कि कास्ट सिस्टम, अगर हम कास्ट जो है उनमें भेदभाव करना स्टार्ट कर दें तो वो इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, ये बाकी ये वाली कोई इनइक्वालिटी नहीं है, ये तो एक दुनिया में आए वो लोग हैं, वो दोनों हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं आराम से, चाहे वो अलग धर्म के हैं, सब कुछ अलग अलग है उनका, पर तब भी वो जो है कितनी आराम से जो है बातें कर रहे हैं। बाकी कहते हैं इनइक्वालिटी हम और चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट। 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 You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people, and even next. And even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up and more stories. People who write stories get their ideas from the shores of different places, from books and a real life, and from their examination. Some many have lived in forests close to animals and chosen to write to their fights and friendship. Others read real accounts of the kings and queens and wrote stories about love and horror. Some dipped into their next। इसमें आपको यही बताया गया है। ये हम नेक्स्ट पेज पे आगे ऊपर। Far were forced to live in a place where all people from the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example, the deer and the cat, and do entertain themselves, played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write?
कहते हैं हम किसी को हर किसी को कुछ अलग अलग चीजें जो है पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को स्टोरी सुनना पसंद है, किसी को भूत वाली स्टोरीज जो है वो अच्छी लगती है। हर किसी का जो है अलग अलग जो है अपना हिसाब किताब है, हर किसी का अलग है अपना। ठीक है, नेक्स्ट। Diversity in India. India is the country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions, but actually, if you think about it, we do many things that are similar, expect that we do them in a different ways। कहते हैं अब डिवर्सिटी इंडिया की क्या है कि इंडिया में बहुत ज्यादा डिवर्सिटी, मैनी डिवर्सिटी, मतलब अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, कई लोग अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग फेस्टिवल्स है इधर, अलग अलग फूड है इधर, बहुत कुछ है इधर, सब अलग अलग है ना। तो कहते हैं कि पर एक चीज इनमें कॉमन है, एक चीज है कॉमन है, वो कॉमन क्या है कि ये इंडिया के रहने वाले हैं। अब व्हाट डू वी एक्सप्लेन डिवर्सिटी, डिवर्सिटी की अब डिफाइन हम diversity किसको बोलेंगे? A little more than 200 years ago and long before the train, aeroplane, bus and car became a part of our life, people traveled from one part of world to another in ships and horses or camels or foot। कहते हैं अब तो ये हो गया कि अगर कि अगर जाना है, कहीं दूर यात्रा वगैरह करनी है, तो आप ट्रेन से करो, बस से करो, कार से करो, एरोप्लेन से करो, इन चीजों से कर सकते हो। आप पूरी दुनिया घूम सकते हो इन चीजों के, चाहे आप शिप, हॉर्स, कैमल, सब कुछ जो है कर सकते हो, घूम सकते हो दुनिया से। नेक्स्ट। ये ये चार्ट छोड़ दो, ये कोई फायदे वाला नहीं, ये ऐसे ही गिवन है। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for the people to trade with. And people, it took so long to travel. Once they got a place, people stay there, often there for a long. Many others left with their homes because there were families and drought. They could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war. Sometimes, as they began to make their homes in new places, become people is to change a little, and other times they manage to do things on the old ways। कहते हैं, अब पहले जब कोई काम वगैरह नहीं होता तो कुछ नई चीजें होती थी, तो लोग तब भी तो रहते ही थे, तब भी रहते थे। ट्रे अपना वो व्यापार करना, उन्होंने दूर दूर तक चल के जाना, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो करते ही थे। अब एक जगह अर्थक्वेक, जब ड्रोट आ जाना, पानी की समस्या हो जाना, वो सब कुछ टैकल करते ही है ना। तो इधर हर टाइप के जो है लोग हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, फूड हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे उनके म्यूजिक अलग अलग हो, हर चीज अलग अलग, लोगों के अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। The history of many places show us influence with the help to shape life and culture there. The religious became is diverse because their unique historical. Similarly, diversity also comes from the people adapt their lives in the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in the mountains area। अब कहते हैं कि हर किसी का अपना नया रहना है। अब अगर मैं बोलूं कि एक मुझे जगह मिल रही है,
एक जो है वो सी के पास है और दूसरी जो है वो पहाड़ों में है। तो मैं बोलूंगी कि हाँ, सी वाली पास वाली ज्यादा अच्छी है, कि पहाड़ियों में ऐसे भी क्या पता पहाड़ कब भी गिर जाए, कम से कम सी वाली जगह शांति आरामदायक होएगी, है ना। तो ये चीज बोला गया है। नेक्स्ट। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work do not different in the cities of each forget who closes people's lives and try to the physical surrounding and there is a city become several grow their own vegetables and grew instead they depend upon the market to buy all the food and the goods of the need. Let us understand what do you mean by historical and geographical factor influence with the diversity of the religion we can do by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. अब कहते हैं हर किसी का रहना सहना अलग है, हर कोई काम करने का तरीका जो है वो अलग है। कहते हैं बाकी एक दो जगह कंट्रीज, हम दो जगह की बात करेंगे जो सबसे अलग है वो है केरला और लद्दाख। नेक्स्ट। पहले इन्होंने लद्दाख की बात की है। लद्दाख क्या है? एक डेजर्ट है, ठीक है, जो कि माउंटेन्स एरिया में है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। वही निकाल जो मैं पढ़ रही थी, ये बॉक्स स्टार्टिंग में। वहाँ में कहते हैं कि ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में है। Very little agriculture is possible here since this region do not receive any rain and it is covered with snow for a large part of year. There are very few trees grown in this region. Drinking water people depend upon melting snow during the summer months. अब कहते हैं लद्दाख में क्या है कि आप देखोगे ये जो है इधर बारिश जो है वो नहीं आती, ठीक है। और अगर